Now, today we are going to start with this chapter, retirement of partner. Now, over here, okay, मेरा रिटायरमेंट नहीं है, ओके, पार्टनर का रिटायरमेंट है. तो ये जो रिटायरमेंट है, वन रिटायरमेंट इज यानी आई डिसाइड कि अब मुझे ये बिजनेस में रहना नहीं है, तो मुझे अलग हो जाना है. तो दैट इज वन वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ अ बिजनेस, जिसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. बट देयर कैन ऑल्सो बी दैट कि अचानक कोई पार्टनर का डेथ हो गया, तो वो पार्टनर भी एक पार्टनरशिप को लीव कर रहा है. तो वी यूज द टर्म रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर. नाउ जस्ट लाइक in admission, what we did is, in admission of partner, there were two partners A and B. Third partner C entered the business, new partner. So whenever a new partner comes, in case of admission, he will bring money in the form of capital and will also bring his share in goodwill. So ये दोनों चीज वो पार्टनर लेके आता है. बट what happens at the time of retirement? Say for example, if a person is saying कि अब मुझे ये बिजनेस में रहना नहीं है, मुझे निकल जाना है पार्टनरशिप में से, तो आई विल से ओके, अभी तक तुम्हारा जितना भी इन्वेस्टमेंट था बिजनेस में वो तुम वापस ले लो. सो जो भी बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्ट किया है उसको हम कहते हैं कैपिटल. तो जितना भी तुम्हारा कैपिटल है तुम उसको लेके चले जाओ. तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हमें उसको उसका कैपिटल वापस कर देना पड़ेगा. एट द सेम टाइम वो कैपिटल में तो बोलेगा कि मेरा इतना पैसा था मुझे वापस दे दो. बट एट द सेम टाइम वो ऐसा बोलेगा कि 15 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं और इतना अच्छा बिजनेस का नाम हुआ है, तो ये नाम का भी कोई वैल्यू है, कोई कीमत है. ये अचानक तो नहीं बन गया. इट हैज टेकन 15 years ऑफ हार्ड वर्क ऑफ ऑल ऑफ अस टुगेदर टू बिल्ड द नेम. तो ये नाम का भी मुझे पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं चला जाऊंगा उसके बाद भी ये नाम रहेगा और ये नाम से तुम लोग कमाओगे. अब ये नाम बनाने में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे उसमें भी मेरा हिस्सा चाहिए. तो द रिटायरिंग पार्टनर विल ऑल्सो आस्क फॉर हिज शेयर इन गुडविल. So now, students, we have to see two things in retirement. One, कि उसका जितना भी कैपिटल है वो उसको वापस कर देना है, और उसका गुडविल में जितना भी हिस्सा है वो भी हमें उसको दे देना है. इन एडमिशन व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, वो नया पार्टनर पैसा लेके आएगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा. एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग फॉर्म का गुडविल है उसमें भी वो अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा. सो बेसिकली एडमिशन एंड रिटायरमेंट आर वेरी सिमिलर चैप्टर, एक्सेप्ट कि एडमिशन में इनफ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड शेयर इन गुडविल. In retirement, outflow of money in the form of capital and share in goodwill. तो very simple, तुम्हें ये कंसेप्ट समझना है, गोखम पट्टी नहीं करना है. Now, एडमिशन होता है तो क्या होता है? दो फ्रेंड्स थे और तीसरा फ्रेंड आ गया, तो कैनाई से अब बंटवारा 3 में होगा. तो existing partners will have to generally, I'm using the word generally, sacrifice. Generally इसमें जो existing partner है they will sacrifice so that the new partner gets a share in the profit. But in case of retirement there will be generally
गेन। क्यों गेन? अब 3 जन थे, ए बी एंड सी, तीसरा चला गया तो पूरा जो प्रॉफिट है अब ये दोनों के बीच में बटेगा। तो हो सकता है कि दोनों पार्टनर गेन करे या कोई एक पार्टनर गेन करे, या ऐसा भी हो सकता है एक पार्टनर गेन करेगा एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। बिकॉज योर व्हाट इज हैपनिंग डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू गो बैक टू द कंसेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, कि यहाँ पे पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है जब रिटायरमेंट हुआ तो जो नया रेशियो डिसाइड किया उसमें एक पार्टनर को गेन हो रहा है और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टनर आर गेनिंग, ऐसा भी हो सकता है कि वन पार्टनर इज गेनिंग एंड द अदर पार्टनर इज नाइदर गेनिंग नॉर सेक्रीफाइसिंग। तो इट डिपेंड्स, ओके, वी विल सी इन डिटेल। तो एडमिशन और रिटायरमेंट में बेसिक डिफरेंस यही है कि एडमिशन में न्यू पार्टनर कम्स, सो ही ब्रिंग्स मनी, ही ब्रिंग्स शेयर इन गुडविल, जनरली द एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। But in case of retirement, what happens is that in case of retirement, what happens is that the partner who is going will ask for his money, what he has invested in the form of capital, and he will also ask for his share in goodwill. Now, existing partners will generally gain. Gain यानी क्या? कि उनका gain क्या है? उनका नया ratio is more than the old ratio. तो ये एक बार सब लिख लो and then we proceed with the chapter. किसी को कोई डाउट है तो you can raise your hand. Okay. लिख लो फटाफट. Then we go to the sums. Okay, come to illustration 1 on page number 217. Now, over here, let's read the question. M, N, and O are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. Calculate new profit loss sharing ratio under the following circumstances. First, if M retires, if N retires, and if O retires. Now we have to calculate the new profit sharing ratio. Now, at the same time, I also want you to find out the gain ratio. Okay, gain ratio भी हमें find करना है. तो new profit loss sharing ratio
and also gain ratio. Now, let's first write first condition M N O. Now, ratio is 4 is to 3 is to 2. So 4 plus 3, 7 and 2, 9. 4 by 9, 3 by 9 and 2 by 9. This is the old ratio, new ratio and the gain ratio. Now both is simple hai. Okay, in exam such sums are not going to come. They are just going to be part of the full-fledged sum. So it will be part of your working. Now over here, first M retires. तो अगर M retire हो गया and no information is given, then the ratio, new ratio will be same as the old ratio and the gain ratio will also be the same. So first May new ratio will be 3 is to 2 and the gain ratio will also be 3 is to 2. Okay. Second, now in second, n retires. If n retires, तो ये n चला गया, तो क्या रह गया m और o. तो इनका न्यू रेशियो will be equal to 4 is to 2 or we can say 2 is to 1 and इनका gain ratio will also be the same. क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है तो पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं. सो अगेन सेम 2 is to 1. थर्ड, ओ रिटायर्स. अब m और n है तो क्या हो जाएगा. नाउ न्यू रेशियो is equal to 4 is to 3 and gain ratio will be equal to again 4 is to. कैसे किया हमने. जो चला गया वो चला गया, जो रह गया वो उन्हें पुराने रेशियो में अब प्रॉफिट शेयर करेंगे. ओके, तो बिकॉज न्यू इज सेम, ओल्ड इज सेम, गेन इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन द सेम. तुम्हें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. नाउ आई वांट यू ऑल टू ट्राई इलस्ट्रेशन नंबर 2. इलस्ट्रेशन नंबर 2. अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है इलस्ट्रेशन 1 में. और वेट, व्हाई डोंट यू डू एक्सरसाइज सम. अच्छा, 2 कर लो, उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज में. सो लेट्स डू इलस्ट्रेशन 2 नाउ. You also try on your own. I'll copy the sum for you. Okay, you can try on your own, and those who are not able to try can look into the whiteboard and then do it. If you have any doubts, please ask. M, N, and O are partners sharing profit and loss in the ratio of 4 by 9, 1 by 3, and 2 by 9. Find out the new profit loss sharing ratio. I would also say also find out the gain ratio. Now, over here, first let's solve this. 4 by 9 is to 1 by 3 is to 2 by 9. Now, how do we do this? Now, over here,
Over here, we have to have the denominator the same. So what we do is 4 by 9 as it is, 1 by 3 जो है, into multiply by 3 by 3, which is equal to 3 by 9 is 2. Now 2 by 9. तो अब नया रेशियो, उनका ओल्ड रेशियो क्या आया? ओल्ड रेशियो फॉर M and O is equal to 4 by 9, 3 by 9 and 2 by 9. Now, first condition, M retires. So no problem, अगर वो रिटायर हो रहा है तो होने दो, बाकी दोनों जो हिस्सा उनका जैसे पुराना था वैसा ही नया रहेगा. So इनका new ratio will be M retired will be 3:2 and इनका gain ratio will also be 3:2. तुम्हें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली कर लो ये. Second, N retires. So new ratio is equal to N गया तो रह गया 4:2. That is equal to what? 2:1. And gain ratio will also remain the same, 2:1. Third, O retires. Let him retire or let her retire. Again new ratio will be 4:3 क्योंकि ये O गया तो रह गया M और N. And gain ratio will also be equal to 4:3. एक्सरसाइज के जो सम्स है वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए इन माय वीडियो लेक्चर. यू ऑल हैव टू सी माय वीडियो लेक्चर्स एंड सॉल्व दोस सम्स एज योर होमवर्क. ओके, सो आई एम कवरिंग द इलस्ट्रेशन सम्स ओवर हियर. ये तुम अभी मेरे साथ कर रहे हो, फिर ये होमवर्क में भी करना है, और एक्सरसाइज के सम्स है वो तुम्हें लेक्चर्स देख के सॉल्व करना है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, थर्ड इलस्ट्रेशन. Nice one. Okay, now let's read the question. Illustration 3. X, Y, and Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Y retires as a partner. So partner Y is retiring. X gains, ध्यान देना please, X gains 1/9 share and Z gains 2/9 share from the profit and loss share of Y. Calculate the new profit and loss sharing ratio of X and Z. So first let's write X, Y and Z. Old ratio is 3 by 6, 2 by 6 and 1 by 6. Is this clear? Now, mu, we don't know, but gain. X ने कितना गेन कर लिया? 1/9 शेयर. और Z ने कितना गेन कर लिया? 2/9. ओके, तो X ने 1/9 शेयर गेन किया और Z ने 2/9 शेयर गेन किया. So in that case, let's see now what's the new ratio. Now we go to the formula. Gain is equal to new minus old. Therefore, new is equal to gain plus new is equal to gain plus old, or we can say old plus gain. तो old ratio था
3 by 6 plus 1 by 9. So let's solve it. You can cross multiply. That's the best way of doing it. If you cannot do the cross multiplication, then you can do LCM method also. So 6 or 9 hai. So you can take do it this way. 6 hai, 9 hai. So 3, 3 twos are 3 threes are again 3 and 2. So 3 threes are 9 and 2, 18. You can take LCM as 18 and do it also. I'll show you the LCM method. 6 threes are 18, 3 threes are 9. So 9 plus 9 twos are 18, 2 ones are 2 upon 18. Y तो है ही नहीं, Y रिटायर हो गया. Z देखते हैं. 1 by 6 plus 2 by 9. Again 18 is the LCM. 6 threes are, so 3, 9 twos are plus 4 upon 18. So which is equal to 9 plus 2, 11 by 18. And over here it will be 7 by 80. So new ratio is equal to 11 is to 7. Answer. Please do the same. If you have any doubts, please ask. Once again, I am explaining the concept. Now, over here, let me change the color of the pen. Okay, now this is the old ratio, 3 is to 2 is to 1. Now, gain is given. It is given in the question that x gains 1/9 and z gains 2/9 from y, because y is retiring. तो y का जो हिस्सा है वो चला जाता है x को 1/9 और z को चला जाता है 2/9. से फॉर एग्जाम्पल तुम 3 लोग हो, अब एक चला गया तो उसका जो हिस्सा था वो तुम दोनों में बट गया. तो अब तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा जो ओल्ड था वो तो है ही, उसके साथ साथ तुम्हें जो फायदा हुआ बिकॉज द थर्ड पर्सन लेफ्ट वो भी मिलेगा. तो गेन इज इक्वल टू व्हाट? न्यू माइनस ओल्ड. गेन यानी जो नया था माइनस जो पुराना. पुराना कम था क्योंकि 3 पार्टनर थे, नया ज्यादा है क्योंकि 2 पार्टनर है. तो न्यू इज इक्वल टू व्हाट? गेन plus old. If we go as per this LHS RHS, or we can say old plus gain, यानी पुराना जो था प्लस जो गया उसकी वजह से जो मिला, so old plus gain. तो यहाँ पे न्यू में हम क्या करेंगे? न्यू में हम करेंगे old plus gain which comes to 11 by 18, and same thing for Z, old plus gain which comes to 7 by 80. Got it? Is the doubt clear now? Sneh? Yes, sir. Okay. Now, you have any other doubts, Sneh? No, sir. समझे गए हो ना एकदम बराबर? हाँ. Okay. Ratio में है ना, be careful क्योंकि ratio में you have to do lots of calculation and you can't do this on calculator. એટલે manually જ કરવું પડે. એટલે થોડું કેરફુલ રહી અને સ્લોલી જજો. ડોન્ટ સ્પીડ અપ ઇન એક્ઝામ. કેમ કે રેશિયો રોંગ થઈ જશે તો ગુડવિલ ને અસર કરી શકે છે. ઓકે, especially the gain ratio, we have to be careful. Now, if all are done, let's go to illustration 4. Mark it important. Give it a try. Let's go to the sum now. Illustration 4 is a tricky one, so dhyan dena please. Now, over here, in this sum, very interesting concept is given. O, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:5.
in the ratio of 4:5. O retires and his share is gained by B and C in the ratio of 1:4. Calculate Calculate new profit and loss ratio of B and C. Now, the old ratio is 4:5:1. Okay. So I'll write over here, old ratio is 4:5:1. Now, who is retiring? O is retiring. So let's do it in our format. O, B, and C. Old ratio is 4/4 and 5, 9 and 1, 10. B is 5/10 and C is 1/10. Now, new ratio, who is retiring? O. So इसको मैंने cross कर दिया and then the gain ratio. Now, let's calculate over here कि O का जो हिस्सा था 4/10 वो किसको मिल रहा है? B and C in the ratio of 1:4. So ये जो 4/10 है उसका 2 parts हो जाएगा. एक हो जाएगा 1/5 और दूसरा हिस्सा हो जाएगा 4/5. So let's calculate first gain of B. तो B कितना gain करेगा? Will be gained by B and C in the ratio of 1:4. Will be gained by B and C in the ratio of 1:4. तो B का gain कितना होगा? 4/10 into 1/5. 4/10 into 1/5 is 4/50. And gain of C उसका आ जाएगा अगेन 4/10 में से उसको कितना मिल रहा है? 4/5 which is equal to 4 4s are 16/50. तो 4/50 and 16/50. So gain of B is 4/50 and gain of C is 16/50. Cross verify कर लो. 4 plus 16 is 20/50 यानी 2/5 and 4/10 is also 2/5. तो क्रॉस टैली हो जाना चाहिए कि ये दोनों का गेन is equal to share of O in the old ratio. Now new ratio we have to find out. Very simple. Old plus gain. LCM is 50, so 29/50, and then 1/10 plus 16/50 is equal to 5 plus 16, 21/50. So now we get the new ratio 29/50. Please do the same. If you have any doubt, please ask. Okay, now illustration 6 is an interesting illustration. Now over here, let's read the question first. RBI are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4:3. B retires and B retires and 1/4 share of B is acquired by R and remaining share is acquired by I. Find out new profit loss sharing ratio of R and I. Now first let's write R, B and I. Old ratio 5:4:3. So 5/5 and 4, 9 and 3, 12. 4/12, 3/12. Now, new ratio, who is retiring? B is retiring. So B में cross कर दो. Gain ratio
B में cross कर दो so that there is no confusion later on. Now let's calculate what is given. Share of B. Now let's check share of B. कितना है share of B? Share of B is 4/12. तो ये जो share of B है 4/12 वो किसको मिल रहा है? Is acquired B का 1/4 शेयर, ये शेयर ऑफ बी जो है उसका 1/4 शेयर इज अक्वायर्ड बाय आर. तो आर को क्या मिला? आर्स गेन. आर्स गेन इज इक्वल टू बी का जो शेयर है 4/12 बी का जो शेयर है 4/12 उसमें से 1/4 शेयर ऑफ बी, उसका 1/4 शेयर किसने अक्वायर किया? आर ने. तो आर को कितना यहाँ पे मिल रहा है? आर को मिल रहा है 1/12 एंड रिमेनिंग शेयर इज अक्वायर्ड बाय आई. तो आई को कितना मिलेगा? अब बी का शेयर था 4/12, उसमें से 1/12 ले लिया आर ने, तो रह गया कितना? 3/12. So all of you understood this. Once again I'll repeat. B का जो शेयर था 4/12 उसका 1/4 ले लिया आर ने, तो इसका 1/4 कितना हुआ? 1/12. सो 1/12 आर को मिल गया और उसका जो बाकी था 4/12 में से 1/12 चला गया आर को, तो रह गया कितना? 3/12. तो यहाँ पे हमारा गेन क्या हुआ? आर को मिला 1/12 और आई को गेन हुआ 3/12. लेट्स चेक हमारा कैलकुलेशन सही है कि नहीं. तो 1/12 प्लस 3/12 4/12. तो यहाँ पे आ गया बी इसका भी है 4/12. You can see 4/12. तो मैच हो गया. Now find the new ratio. 5/12 plus 1/12, which comes to 6/12, and 3/12 plus 3/12, which comes to 6/12. So now the new ratio is equal. So new ratio is equal to 1:1. Got it, all of you? Any doubt, anyone? Seventh and eighth are very easy, so you have to do it as homework. Let me check the ninth one. Ninth also you have to do it. So I think ratios के सारे typical sums I have covered. Ratios के all typical sums important I have covered, which will be useful to you while solving the full-fledged sums. Now what you will be doing is you will be watching my video lectures and you will be solving all the exercise sums with me and then finishing off with all the illustration once again, so that तुम्हारा ratio का concept for retirement is over. Okay.